आज हम डिस्कस करेंगे बैड डिफ्लेशन के बारे में, ठीक है। हेडिंग डाल दें बैड डिफ्लेशन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन एज वेल। बहुत आता है पास्ट पेपर्स में about evaluating and assessing deflation, whether it's harmful or beneficial, ठीक है। So one of the important past paper questions that have come across many times is that discuss whether deflation is always harmful, ठीक है। बैड डिफ्लेशन क्या है? बैड डिफ्लेशन इज बेसिकली व्हेन डिफ्लेशन डज रिसेशन में नॉट। होता है शायद। क्या कह रहे हो निवियान? रिसेशन में तो नहीं आती बैड डिफ्लेशन? 100% करेक्ट, रिसेशन में ही आती है, एग्जैक्टली। So basically bad deflation is when deflation results into negative consequences, deflation resulting into harmful or negative consequences for people, for firms, and for the economy as a whole. So it results into negative consequences for consumers, right? For consumers, those are your households, your firms, okay? Those are your producers, your government as well, right? And your overall economy, it is resulting into an overall economy में एक declining situation आ रही है due to bad deflation. Now what is bad deflation and why does it arise? ठीक है, why bad deflation क्यों आती है, bad deflation क्यों arise होती है? Bad deflation arise होती है number one due to a persistent decline in aggregate demand. Persistent decline in aggregate demand, that is when a recession occurs, ठीक है ना। अब रिसेशन क्यों आता है? आपको पता है रिसेशन आता है बिकॉज आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही होती है फॉर 2 consecutive quarters, राइट? तो अगर 2 consecutive quarters तक अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरती रहेगी, राइट, तो फिर उसके रिजल्ट में जो डिफ्लेशन आएगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज बैड डिफ्लेशन। सो अ टेम्पररी, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, सो फॉर एग्जांपल अ टेम्पररी फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, a temporary decline in AD, right, may not be considered as a bad deflation. A temporary decline in AD results into a deflationary effect. It results into a deflationary effect. उसका effect deflationary होता है, ठीक है। Why? Because obviously, because when AD falls, inflation falls, right? It reduces your price level. So because of that, it reduces price level. So because of that, yes, on one hand you can say that yes, AD गिरने से deflation आती है, but don't consider that as a deflation that occurs in a recession. The deflation that occurs in a recession is worse than a deflation that occurs due to just a small fall in aggregate demand. So instead, तो मैंने इसका एक बेहतरीन हल ये निकाला है एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर आप टेम्पररी डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू अ, इसको लिखो, इट रिजल्ट्स इनटू अ डिफ्लेशनरी इफेक्ट। Instead of saying कि भाई it will result into bad deflation, say it will result into a deflationary effect. So for example, ये government ये ज़्यादा ये क्यों हो रहा होता है? तो for example, if inflation is rising, if inflation is rising and if inflation is getting high, and it is causing a negative impact on consumers and poor people, in that case the government may come up with contractionary demand side policies. Now what are contractionary demand side policies? Contractionary demand side policies are those policies that government implements in order to reduce aggregate demand to control inflation, to reduce inflation. So if inflation is rising, government क्या करती है? Government comes up with or it implements contractionary demand side policies. Now these contractionary demand side policies are those policies that are aimed at reducing, इनका aim क्या होता है? Aimed at reducing aggregate demand. अब कैसे करते हैं हम इसको? What are those contractionary policies? ये हम जब policies का chapter करेंगे तब discuss करेंगे. But इस केस के अंदर क्या होगा? Obviously when AD falls, जब AD आपकी fall करेगी, it will reduce inflation. It will reduce inflation. That is, it reduces price level, right? It reduces price level. तो जब price level आपका कम हो जाएगा, it will result into a deflationary effect. So don't say कि and by the way, this kind of deflation do you think that this kind of deflation is harmful for the economy?
जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से रिजल्टिंगली जो इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया, डू यू गाइस रियली थिंक दैट दिस इज हार्मफुल फॉर द कंट्री? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये तुम लोग को इवैल्यूएट करना पड़ेगा इन 8 मार्क क्वेश्चन. सो अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल अपना डिमांड साइड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे तो मेरे हिसाब से ये हार्मफुल नहीं होगी. उसकी वजह ये है, उसकी सिंपल वजह ये है इसलिए हार्मफुल नहीं होंगी क्योंकि ये जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं इसलिए इंप्लीमेंट करें जो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि डिफ्लेशनरी इफेक्ट आए इकोनॉमी में. द गवर्नमेंट itself wants to bring about a deflationary effect in the economy because inflation is getting out of control. Inflation is getting very high, right? Inflation is galloping. The rate of inflation is getting very high. In that case, the government has to implement contractionary demand side policies to reduce inflation. तो उसके रिजल्ट में अगर deflationary impact आ रहा है तो उससे we can't judge the government's effectiveness based on the fact that it implemented deflationary demand side policies because हाँ उसके नतीजे में जब हम डिफ्लेशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो डिफ्लेशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज विल डेफिनेटली रिजल्ट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखो होता क्या है, पहले तो आप इस बात को समझें. जब now what is going to happen because of deflation your aggregate demand will shift to the left. ठीक है ना? This is your AD, this is your AD1, ठीक है, and this is your aggregate supply. On the y-axis you're measuring real GDP, that is your real national income. On the y-axis you're measuring price level, on the x-axis you're measuring real GDP. So my concern is that अगर आपकी जो real GDP है, अब बात ये है सारी कि what's happening is कि जब आपने aggregate demand कम करी, so a fall in AD results into price level to fall to P1, right? आपका जो price level था that वो पहले क्या था, that was P, now it falls to P1. So price level is falling, things are getting cheaper, but don't think that this is something that is really beneficial or things are getting cheaper because of good reasons. No, that's not at all the reality. Things are not getting cheaper due to good reasons, guys. Things are getting cheaper due to bad reasons. Things are getting cheaper due to reasons that we never wanted them to occur in the economy in the first place. But since they are now there, so that is why we don't consider the things getting cheaper a good thing in the economy. Why? Because things are getting cheaper for bad reasons, right? So for example, अगर एक बच्चा है वो उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, right? मगर अगर वो कुछ let's suppose he consumes some kind of addictive goods in order to improve his performance, right? तो short term performance improve करने के लिए वो कोई joint मार देता है, सही है ना? और उससे उसकी performance जो है वो temporary तौर पे enhance हो जाती है. So उसकी जो performance enhance हो रही है, we can't really say कि भाई that's something that is beneficial in the long run. ठीक है? Do you understand? तो यही बात मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि in a bad deflation, all the price level is falling, all the prices that are falling, and things are getting cheaper, but they're getting cheaper for bad reasons. ठीक है? So जब तुम deflation का diagram बनाते हो, तुम कहोगे aggregate demand यहाँ पे गिर रही है. अब तुम्हें एग्जाम के अंदर जजमेंट करनी होगी. अगर तुम फॉर एग्जाम्पल रिसेशन की बात कर रहे हो और रिसेशन में तो मूवमेंट दिखा रहे हो फ्रॉम एडी टू AD1, ठीक है ना? सो ऑब्वियसली ये AD से AD1 जो तुमने मूवमेंट दिखाई है, ये अब यहाँ पे तुम्हें ऑब्वियसली 6 महीने के एग्रीगेट डिमांड बार बार गिर रहा है, AD गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड गिरता जा रहा है. इतने सारे एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाने की जरूरत तो नहीं है ना. So you just make one aggregate demand curve and you're trying to say over here is कि जब मेरी aggregate demand जो है वो from AD to AD1 जाएगी in a recession, that is obviously a decline for a consistent 6 months. ठीक है ना? That is a decline for a consistent 6 months जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो. ये तुम्हें जजमेंट लेना होगा एग्जाम में, ठीक है? और अगर तुम फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हो कि it's not a recession that is taking place in the economy and it's just a temporary negative demand shock. Why is it a negative demand shock? Maybe because of contractionary what? Nivyan, कौन सी contractionary demand side policy?
नो यार निव्यान, क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसी, अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं टेम्पररी तौर पे, तो उसके नतीजे में एडी फॉल्स टू 81. नाउ दैट इज नॉट अ रिसेशन. एडी फॉल्स टू 81. दैट इज नॉट अ रिसेशन गाइस. ठीक है, ठीक है, रिमेंबर दैट. दूसरी चीज, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों के अंदर फर्क इतना ये है कि जब हम रिसेशन की बात करते हैं, तो जो अफेक्ट इधर आ रहा होगा वही अफेक्ट इधर भी आ रहा होगा. अफेक्ट दोनों का एक, कॉन्सिक्वेंसेज एक होंगे. द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर बोथ विल बी द सेम. However, the extent of those consequences, the magnitude of those consequences are going to vary. They are going to vary from for a recession, and they are going to vary for a temporary negative demand shock. मतलब कि आपको मालूम है कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर रही है in a deflation, so your real GDP falls. Now, falling real GDP means what? It means that output has declined. Output has declined, right? It means that national income, your income generated in the economy and the national output of the country has actually fallen. It falls. Now, that is not a good thing, right? Obviously, it is going to result into massive unemployment, right? It will result into massive unemployment. And again, the extent of, again, we want to evaluate the extent of unemployment will be dependent on the extent of inflation, on the extent of recession, on the extent of recession. So a deep recession will result into a more massive unemployment. A deep recession would result into a major massive unemployment than a recession that is not that deep, or a recession that is not that bad. So maybe a recession that has just started to occur in the economy, right, might have less negative consequences than a recession that is very very deep in the economy, right? So अब एग्जाम में जब तुम ये डिफरेंशिएट कर रहे हो कि हाउ डिस्कस whether deflation is always harmful, so apart from just giving the disadvantage of deflation, the examiner would really want you to evaluate some of these key concepts जो मैंने अभी तुम लोगों को बताए हैं. This is what they are looking for. कि the extent of unemployment dependent on the recession. And by the way, let me tell you one thing. The unemployment that occurs due to a recession, the kind of can anyone tell you? Can anyone of you tell? Nivyan, you don't answer. Can anyone of you tell, apart from Nivyan, that the kind of unemployment that results from a recession, उसको हम क्या बोलते हैं? It results into cyclical unemployment. Cyclical unemployment को good हम demand deficit unemployment भी कहते हैं. A kind of unemployment that results into a deficit in aggregate demand. There is a demand deficit in the economy. Your unemployment is resulting due to a deficit in AD, and इसको हम कहते हैं demand deficit unemployment. Now, such an unemployment is really bad for the country. This is unwanted unemployment, guys. इसको तुम ये भी लिखते exam. This is unwanted unemployment. You don't want this kind of unemployment to occur in the economy. It will create, and the larger this kind of unemployment is, the worse its consequences. It will create complete chaos and havoc in the economy, resulting into disastrous consequences, because now the government will have to implement extreme अपना expansionary demand side policies to lift the economy out of recession and to reduce such an unemployment in the country. But वो बात की बात है. Right now what we are saying is कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी इसको सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रिसेशन में आती है. तो अगेन बैड डिफ्लेशन में सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है. तो बेटा 1 मिनट के लिए 2 मिनट का पॉज दो और हम वापस अपनी उस पुरानी वाली बात पे आते हैं कि यहाँ पर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इधर भी आएगी और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इधर भी आएगी, दोनों जगह आएगी. लेकिन बात यह है कि इन दोनों में फर्क होगा. यानी इधर के सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में और इधर के सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में फर्क होगा. किसका फर्क होगा? मैग्नीट्यूड का. बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, फर्क होगा मैग्नीट्यूड का. द मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट will vary because why? Because one occurs due to a deep recession, the other occurs due to a government imposed
deflationary policy. So government imposed deflationary policies will result into cyclical unemployment, but also the government will also make sure कि इतनी massive cyclical unemployment ना आए. But recession में तो recession is automatic, right? Recession में तो government is not playing its part. Recession is just occurring in the economy due to a declining AD. वो हम बाद में discuss करेंगे क्या reasons हो सकते हैं कि भाई recession इतना आ जाता है economy के अंदर. But the fact that again, you know, बच्चे ना ये एग्जाम में डिफरेंशिएट नहीं करते. वो इस तरह की बातें लिख देते हैं कि भाई क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी तो एडी करेगा, इट विल रिजल्ट इनटू डिफ्लेशन एंड रिजल्टिंग इनटू अ रिसेशन. नाउ ऐसा नहीं होता. इट डजंट वर्क्स लाइक दैट. So you can't say that a temporary negative demand shock will result into a recession. You understand that? Although both will result into cyclical unemployment. Why? Because दोनों के लिए यही डायग्राम बनेगा बेटा. ये डायग्राम दोनों केसेस में एप्लीकेबल है, लेकिन दोनों डायग्राम की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस में डिफरेंस होगा. ठीक हो गया. So a bad deflation is basically the result of a recession. Remember, a bad deflation is a result of a recession, and a temporary negative demand side shock will result into a recessionary effect. That's it. It's also known as malign deflation.